Namaskar. Welcome back to my English tutorial class. I am Meena Gargeti. Students, today I am going to explain the second poem of class 10th from First Flight. Its name is Fire and Ice, composed by Robert Lee Frost. Robert Lee Frost was 20th century American poet. Students, I want to tell you something more about Robert Frost. Robert Lee Frost is one of the most celebrated figures in American poetry. He was born on 26 March 1874 in San Francisco, California, USA. His father was William Prescott, a journalist, and his mother was Isabel Moody. She was very fond of verses. Students, Robert Frost earned a great name and fame in the world of poetry. He is the only poet who received 4 Pulitzer Prizes for poetry. He was honored the Congressional Gold Medal when he was 86 in 1960. He died on 29th January 1963 in Boston. So student, this is the short description or introduction of Robert Lee Frost. If you like, you can take a screenshot of this. Okay students, now I am going to read the poem. Fire and ice. Some say the word will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish spice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. Students, this is a short poem of 9 lines. Its title is also very short, Fire and Ice, but it is very significant because the whole poem revolves around the title Fire and Ice. Students, one thing more I want to tell you. Fire and ice have 2 meanings. Number 1, literal meanings. Number 2, they have symbolical or metaphorical meanings also. Okay, I will explain this poem line by line with these 2 meanings. Some say the word will end in fire, some say in ice. Some means some people. The poet wants to say that there are some people who say that the world will be ended by fire. And on the other hand, there are some people who think that the world will be ended by ice. Who say the world will be ended by fire, there means extreme heat. The literal meaning of fire is extreme heat. They think that due to global warming, there will be extreme heat. The Earth's temperature is rising day by day, and its result is some natural calamities like earthquake, volcano, tsunamis. And these natural calamities are so dangerous that one day they will destroy the whole world, and world will be ended by this heat, means fire. On the other hand, people who say that the world will be ended by ice, the ice literal meaning is extreme cold. They think that one day the sun will lose its heat and light and the world will be frozen. And in such condition, nothing could be survived on this planet, on this earth, so the world will be destroyed. In extreme cold, neither vegetation nor any creature like animal, birds as well as human beings, nobody can live, can survive in extreme cold. So the world will be ended by ice, means extreme cold. This was the literal meaning. And the symbolical meaning of fire is our desire, our passion, our infernal feelings
like fury, violence, cruelty, greed, lust, etc. These are infernal feelings because in the beginning they are simple and they are in our control, but by and by they go beyond our control and we have no control over them. On the contrary to it, they control us. They lead us towards destruction, towards and they lead us towards destruction, and when we go towards destruction, the world will be ended or destroyed. So, how the world will be destroyed? By our fiery feelings, our infernal feelings, our uncontrolled feelings, means fire. And that group of the people who say the world will be ended by ice, the symbolical meaning of ice is our cold feelings such as hatred, indifference, insensitivity. They mean to say that we have lost our warm and soft feelings like love, kindness, consideration, sympathy, and we have given their place to hatred, jealousy, indifference, insensitivity. These conditions, these feelings are also very bad and dangerous. When we become indifference, we do not take interest in others' matter. We do not take bother to see others suffering, sorrow, pain. We do not move to see them in sorrow or see them crying. We do not take interest. And such indifference is also very dangerous. It will lead us towards destruction, and the world will be destroyed by our such feelings, such cold feelings, because these feelings has made us so cold as ice. So this is also a dangerous situation, and the world will be ended by these feelings. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Now in these two lines, the poet wants to say that from what I have tasted means experienced of desire. The poet wants to say that he has experienced such infernal feelings as such as anger, violence, greed, lust. These feelings are very dangerous, and he understands their effects too. What will be their effects? So he hold means support. I hold with those who favor fire means I means the poet. The poet holds with those means poet supports those who favor that the fire will make the end of the world. Means the world will be ended by fire. He is in support of them. Who says this? But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. Now in second stanza, the poet wants to say, but if it had to perish means end. Twice means two times. But if it had to perish twice, it means the world. The poet wants to say in this line that if the world has to be ended two times, I think I know enough of hate. Then the poet says that he thinks that he knows enough about hate too, about indifference, hatred, indifference and insensitivity. Means such type of cold feelings too. He knows about such type of feelings too. To say that for destruction ice is also great. And he says that to say about destruction by ice means ice can also, means such cold feelings can also destroy the world, and they are
Also, great means strong, powerful, means hate, indifference, insensitivity. These feelings are also very powerful to destruct the world and would suffice. Suffice means sufficient, and they are much more sufficient to end the world. Okay, so this was the explanation in English. Let's me explain it in Hindi too. बच्चों, फायर एंड आइस सकी इसका टाइटल है पोएम का, फायर एंड आइस. फायर मीन्स आग और आइस मीन्स बर्फ. बर्फ से मतलब है ठंड, आग से मतलब है तपन, गर्मी. तो कवि इस कविता में ये कहना चाहते हैं कि आग, तपन यानी तपन और ठंडक, ये दो ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं फायर एंड आइस, जिनके कारण की दुनिया की तबाही हो सकती है, दुनिया खत्म हो सकती है, दुनिया का एंड हो जाएगा. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोग कहते हैं, सम से मीन्स सम पीपल, कुछ लोगों का मानना ये है कि दुनिया का अंत हो जाएगा आग से, और कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत हो जाएगा बर्फ से यानी अत्यधिक ठंडक से. अब यहाँ पे बर्फ और आग, इन दोनों के दो अर्थ हैं. एक तो शाब्दिक अर्थ है, जो कि मैं पहले शाब्दिक अर्थ से आप लोगों को समझा दूंगी, और दूसरा है प्रतीकात्मक अर्थ, जो कवि कहना चाहते हैं. वो जो प्रतीकात्मक अर्थ है उससे भी मैं आपको समझा दूंगी. कि कुछ लोगों का मानना है कि आग यानी अत्यधिक गर्मी से दुनिया का अंत हो जाएगा. अत्यधिक गर्मी कैसे? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का, हमारे इस प्लेनेट का तापमान भी बढ़ता जा रहा है, जिससे कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं. जैसे कभी भूकंप, कहीं पर सुनामी, कहीं पर ज्वालामुखी फूट रहे हैं. तो ये तमाम कहीं पे बाढ़ आ रही हैं. तो ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण आ रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण ही हमारी जलवायु, हमारा क्लाइमेट चेंज होता चला जा रहा है, और उससे ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं. ये प्राकृतिक आपदाएं इतनी भयंकर हैं कि एक दिन ये दुनिया को तबाह कर सकती हैं. दुनिया खत्म हो जाएगी इनके चलते. और कुछ लोग कहते हैं समसे इन आइस की नहीं, ठंड, अत्यधिक ठंड के कारण, आइस मीन्स अत्यधिक ठंड के कारण दुनिया नष्ट हो जाएगी. उनका मानना ये है कि एक दिन सूर्य अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश सब खो देगा, तो इस दुनिया की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो बिल्कुल फ्रोज़न वे में आ जाएगी, मतलब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल शीत हो जाएगा. और ऐसे शीत वाली स्थिति में, ऐसी ठंड वाली एक्सट्रीम ठंडा टेम्परेचर, उसमें ठंड में कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, ना वनस्पति, ना जंतु, न जीव जगत रहेगा ही नहीं. जब जीव जगत नहीं रहेगा तो दुनिया नष्ट हो जाएगी. ये तो इसका शाब्दिक अर्थ था. अब इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि जो लोग ये कहते हैं फायर से दुनिया का, यानी आग से, तपन से, बहुत ज़्यादा गर्मी से दुनिया का अंत हो जाएगा. गर्मी से, आग से उनका तात्पर्य है हमारी फीलिंग्स, हमारी ज्वलनशील भावनाएं, हमारी ऐसी भावनाएं जो बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति की हैं, अगर वो बढ़ जाती हैं तो. और वो भावनाएं क्या हैं? हमारा क्रोध, हिंसा, लालच, काम भावनाएं और हमारा लालसाएं. ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक शुरू में हमारा इन पे कंट्रोल रहता है, शुरू में हमें सही लगती हैं, लेकिन ये अनकंट्रोल हो जाती हैं बहुत जल्दी अगर हम इनका ज़्यादा ही इनको तवज्जो देने लगते हैं तो. और एक दिन ऐसा आ जाता है कि ये हम पे हावी हो जाती हैं, हम इन पे कोई नियंत्रण नहीं रख पाते, उल्टा ये हमको नियंत्रित करने लगती हैं और हमें बर्बादी की ओर ले जाती हैं. धीरे धीरे जब हम बर्बादी की ओर जाएंगे तो एक दिन दुनिया बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि दुनिया हम ही लोगों से है, और हम ही लोग बर्बादी की ओर चले जाएंगे तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी. यानी किस चीज़ से? ज्वलनशील भावनाओं से. ये बहुत तेज जो भावनाएं हैं, इन्हें हमने फायर कह रखा है. फायर के ये प्रतीकात्मक अर्थ है. और कुछ लोगों का जिनका कहना है कि अत्यधिक ठंड से, तो ठंड से उनका तात्पर्य है कि हमारी ऐसी भावनाएं, जैसे हमारे उदासीन रवैया, हमारी नफरत, या हमारी संवेदनहीनता. आज के ज़माने में धीरे धीरे इंसान अपनी सुकोमल भावनाओं को, प्यारी सी भावनाओं को खोता जा रहा है. प्यार, सहानुभूति, किसी के प्रति दर्द, किसी का ख्याल रखना, इन चीज़ों की भावनाओं को हम खोते जा रहे हैं. और इनकी जगह हम किसको जगह दे रहे हैं? अपनी नफ़रत को, उदासीन रवैये को, अपने संवेदन शून्यता को. ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें जब हम इन
भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं तो हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता। दूसरा हमारे सामने रोता रहे, दुखी हो, दर्द से तड़प रहा हो, हमें कोई असर नहीं पड़ता। हम इतने संज्ञा शून्य हो जाते हैं, इतने संवेदन शून्य हो जाते हैं कि हमें उसके ना सुख से प्रभाव पड़ता है ना दुख से, जो कि एक भयंकर स्थिति है। और ये स्थिति हमें और हमारी दुनिया को तबाही की ओर ले जाएगी, यानी दुनिया इस कारण भी अंत हो सकती है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फिर कवि कहते हैं कि क्योंकि मैंने इन डिज़ायर को, यानी इनफर्नल फीलिंग्स जो मैंने आप लोगों को बताई, ज्वलनशील भावनाएं, इन इच्छाओं को मैंने अनुभव किया है। यहाँ पे टेस्टेड से मतलब है एक्सपीरियंस्ड, मीन्स अनुभव करना। क्योंकि मैं इससे कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को अनुभव किया है कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक होती हैं और इनका क्या असर हो सकता है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसलिए मैं उनके पक्ष में हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ, उनका साथ दे रहा हूँ जो इस बात को मानने वाले हैं कि आग से दुनिया तबाह हो जाएगी। जो लोग ऐसा कहते हैं मैं उनसे सहमत हूँ, मैं उनके पक्ष में हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि, इट मीन्स वर्ल्ड, दुनिया, इस दुनिया को पेरिश माने नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, खत्म होना होगा ट्वाइस माने 2 बार। यदि सपोज पहली बार में से बच जाए थोड़ी बहुत तो दूसरी बार तबाह हो जाएगी। तो अगर माना 2 बार तबाह होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मुझे लगता है कि मैं हेट के बारे में भी काफ़ी कुछ जानता हूँ, नफ़रत जैसी भावनाओं के बारे में भी काफ़ी कुछ जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट, और ये कहना कि बर्बादी, बर्फ से बर्बादी, ये बात भी काफ़ी पावरफुल है। यानी ठंड भी इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है, ये स्थितियाँ भी इतनी शक्तिशाली हैं, हमारी उदासीनता, हमारे उदासीन सा रवैया, संवेदन शून्यता, हमारी नफ़रत, ये भावनाएं भी इतनी प्रबल हो सकती हैं, इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं दुनिया को बर्बाद कर देने के लिए। एंड वुड सफाइस, और ये पर्याप्त हैं दुनिया को बर्बाद कर देने के लिए। इसमें जरा भी संशय नहीं है कि इनसे कैसे अंत हो जाएगा, ऐसी भावनाओं से भी अंत हो सकता है क्योंकि ये भी बड़ी हानिकारक है। तो कहने का अर्थ ये है कि फायर एंड आइस, देयर आर 2 एलिमेंट्स विच विल बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यही 2 कारण हैं जिनके कारण दुनिया तबाह हो जाएगी। वो फायर एंड आइस को हमारी भावनाओं से, फायर और आइस हमारी भावनाओं के इनका प्रतीक हमारी भावनाएं हैं, ठीक है, उनके कारण दुनिया तबाह हो जाएगी हमारे अपने रवैये से। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम इन इंग्लिश एंड हिंदी टू। अब नाउ लेट्स मी टेल यू द राइमिंग स्कीम। यस, राइमिंग स्कीम, I have to tell you rhyming scheme of the poem. So students, what is rhyming scheme? Means क्या क्या चीज़ें rhyme करती हैं. Let's see. The first line's last, we have to see the last word. The first line's last word is fire. So suppose its name is A. Fire's name is A. Then the second line's last word is ice. So its name is B. Why? Because ice does not rhyme to fire. It is totally different. So its name is B. Third line's last word is desire, that resembles to fire. So its name is A. And fourth line's last word is fire, it is itself. So its name is A. So what's the rhyming scheme of these 4 lines? A, B, A. Now fifth line's last word is twice, that resembles to ice. So its name is B. And sixth line's last word is hate. It is totally different. Neither it resembles to twice nor to fire. So its name is C. Now seventh line's last word is ice. That's name is B. And eighth line's last word is great. It rhyming to hate. So its name is C. And last line's last word is suffice, that resembles to ice, twice. Okay, so its name is B. So what is the rhyming scheme? Its rhyming scheme is B, C, B, C, B. Means total rhyming scheme is A, B, A, B, C, B, C, B. Okay students, understand? Okay.
I have written these word meanings. Tested means experienced, means अनुभव करना, अनुभव किया. Hold means support, means पक्ष लेना. Perish means destroy or end, नष्ट कर देना, खत्म कर देना. Suffice means sufficient, means पर्याप्त. Fire means desire or passion. These fire and ice have these symbolical meanings. Desire means इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं. Ice means hatred, means नफरत. Indifference means उदासीनता. Now the rhyming scheme A, B, C, B, C, B. I have already told you. Fire and Ice is a symbolical poem inspired by Dante's Inferno. Dante was an old poet and Inferno was his creation. The poet was inspired by Inferno, Dante's Inferno. Now poetic device. Poetic device means figures of speech. First of all, anaphora. What is anaphora? Repetition of words, not letter. Words. Some say in first line and second lines too. When words come two or more than 2 times, there is anaphora. In this poem, some say come 2 times in first line and second line. Some say the word will the word will end in fire. Some say in ice. So some say it come 2 times. So there is anaphora. Enjambment. Enjambment, when a sentence continues without punctuation. Okay, when there is a sentence and it is continue from 2, 3, 4 lines without any punctuation, means without any comma, full stop or colon, semicolon. So there is enjambment. As in the last lines of the poem, there is enjambment. Then alliteration. Alliteration means repetition of some consonant sound. Some say here repetition of S. Alliteration में consonant sound का repetition होता है. Students, alphabet में 5 letters A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी सारे consonant हैं. A, E, I, O, U are our vowels and rest of the letters are consonant, means व्यंजन. हिंदी में व्यंजन. Here is the repetition of S sound. Some S, say S. Okay. Now assonance. Assonance means repetition of vowel sound that is prominent in the line. In 4th line, O vowel sound is repeated. Assonance में repetition होता है vowel sound का, स्वर शब्दों का. जैसे इसमें O का हुआ है 4th line में. Consonance is opposite to assonance. Repetition of consonant sound in the line, whether it is at beginning, middle or end of the word. As in 4th line, with, those, the sound. कॉन्सोनेंट्स जो होता है एसोनेंस का अपोजिट होता है. एसोनेंस में वाउल साउंड को हम देखते थे, इसमें हम कॉन्सोनेंट को देखते हैं. तो जैसे अब वो कॉन्सोनेंट शब्द के शुरू में, बीच में या अंत में कहीं पे भी हो सकता है. अगर 2-3 बार आया है एक ही लाइन में, 2-3 शब्दों में ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ पे कॉन्सोनेंस होगा. जैसे कि 4th लाइन में ये है विद दोज. इन 2 वर्ड्स में विद में भी द और दोज में भी द साउंड आ रही है. सो देयर इज कॉन्सोनेंस. This poem was published in 1920. Okay students, this was the explanation in Hindi and English too, and I have told you rhyming scheme as well as poetic device. So students, if you like, please share my videos and subscribe my channel, and so that I may make other videos too with interest. And till then, stay home, stay safe, and bye.